Match between ALB Knights and the Alphas. Knockout match of SCCT 13th edition, SCCT-green 6th edition. All the best teams. Shams on strike, Dheeraj on non-strike, Satish the bowler. Shams on strike, Dheeraj on non-strike, Satish the bowler. ALB Knights won the toss and elected to field first. First ball of the match, ball in the hands of Satish. Officials for today, Nazir and officials for today, Nazir. In the first ball, Shams out on the first ball. Good catch by the keeper. Nice start for ALB Knights.
Next batsman, Aniket. That's a beautiful bowling. 2 wickets in 3 balls. Batsman was cleaned up by the beauty of the bowling. It's a good decision as far the first over goes. First 3 balls of the over goes. अच्छे से नहीं आता हिंदी मेरे को. LB Knights on the toss and a good decision to ball first. Swing and a miss. Good start by Satish. Wicket dot wicket dot dot.
Question asked every ball of this over. The ball was in the air. Misjudged by the fielder. The Alphas open their account in the last ball of the first over. Score is 1 for 2 after the end of first over. अरे क्या पहले बॉल में स्विंग जावा जबरदस्त अंदर है Next bowler Nikhil. Another wicket in the first ball of the second over. Cleaned him up again. बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग. अच्छी प्लानिंग के साथ आए हैं एलबी नाइट्स ग्राउंड पे आज. एक एक बैट्समैन को टारगेट करते हुए पहले ओवर पे 2 विकेट. अभी दूसरे ओवर पे पहला ही गेंद पे पहली विकेट. अगला बैट्समैन जाते हुए सुशील शर्मा. स्कोर अभी है 1 रन 3 विकेट. 1 ओवर 1 बॉल के बाद. सुशील शर्मा जो शमशाबाद मंडल से बिलोंग करते हैं. स्ट्राइक लेते हुए. बॉल बहुत ही घूम रहा है आज. कुछ बॉल अंदर आती हुई कुछ बॉल बाहर जाती हुई. मैं गलत खेल गया आई थॉट मैं कवर कर दिया था आपने बहुत बेहतरीन बॉलिंग का नजारा. Wide down the leg. First extra from LB Knights. Score moves on to 2 for the loss of 3 wickets after 1.1. Beautiful piece of bowling. Bowling it up, making the ball to swing. इसमें रिकॉर्डिंग देख सकते हैं यूट्यूब में चालू है क्या अभी?
देखने को है, कुछ देख सकते हैं क्योंकि यार बॉल ना ऐसा गुड लेंथ नहीं था कि मैं आगे जाके उसको ये करूँ, तो इट वाज डिसेंट शॉट. Sushil opens his account with that single. Score moves on to 4 for the loss of 3 wickets after 1.5. Last ball of the over coming up. अभी SCCT इधर कर रहे हैं क्या? ये वीक मतलब आज के दिन के लिए, कल फिर बढ़ जाएगा वापस. Dheeraj taking guard for the first time in this innings. He saw 3 wickets falling from the other end. चलो धीरज बॉय. Dheeraj on strike. Nikhil the bowler. Last ball of the over coming up. That's bad pad. After the end of 2 overs, score is 3 for the loss of 3 wickets. Sushil on 1 after 4 deliveries. Think 4 deliveries. Dheeraj did not open his account yet. Nikhil finished well, giving away 3 runs. Took 1 crucial wicket after his first over. Satish continues. देखिए खेलो. कौन सी टीम है सामने वाली? एलबी नेक्स. अच्छा नॉकआउट मैच है. अच्छा. ये कौन सा अपना 41st एडिशन है? ये अपना 39 है. With some good pace, he's getting some good bounce. बाउंस अच्छा है विकेट में. अच्छा विकेट. That's another beautiful piece of bowling. आराम से खेलो रे. After 2.2, score moves on to 4 for loss of 3 wickets. Lovely. That's a quick single. With the single, Sushil moves on to 2 in 7 balls. Dheeraj on strike. He has not opened his account yet. Satish coming up with the 4th ball of this over. He took 2 wickets in the first over, giving away just 2 runs. He's into his second over. खेला ले लो. अरे एक पूरा लेके जाओ आप लोग का ये. Good running between the wickets. That was a quick single. गुड वन. Ball is swinging in. Good single. Score is ticking. Run rate is of 2.47. Projected score is of 49. Current run rate of 2.47. After 2.5, score is 7 for the loss of 3 wickets. Last ball of the over coming up.
That was a chance. Very difficult catch on his follow through. That another good piece of bowling from Nikhil. Nikhil with his second over of this innings. Sushil on strike. Bowling up and letting the ball to swing in this morning. Good condition to ball. This is a 2020 match with a current run rate of 2.10. Score is 7 for the loss of 3 after 3.2. Another beautiful burst of bowling. Very good start by the ALB Knights. अच्छी तो लग रही है. That's down the leg, wide, given by the umpire. Today's officials, Sarat and Nazir. गुड बाय. That good running between the wickets. First run from the bat of this over. खतरनाक लग रही है ना. That's ball up. Misfield by the fielder. Ball is running away to the boundary. That's the first boundary of the match. With that boundary, score moves on to 13 for the loss of 3 wickets. Last ball of the over coming up. First boundary came from Dheeraj bat. Misfield by the fielder. That's another good piece of running between the wickets. With that single, score moves on to 14 for the loss of 3 wickets. End of 4 overs.
Score is 14 for the loss of 3 wickets. Nikhil, after 2 overs, gave away 10 runs. फोर ही फोर Satish with his third over. शॉट है यार That's a good cover drive. Ball is running into the boundary. Second boundary of this innings from Dheeraj bat. Score moves on to 18 after 4.1 overs. Dheeraj batting on 10 of 6 deliveries. Sushil on 4 of 12 deliveries. धीरज अलग ही ट्रैक में बैटिंग कर रहा है सही है धीरज That's good fielding at the in the covers from Shubham. धीरज टिक जाए थोड़ा मस्त खेले नेवर से खेल आज हाँ नहीं बस वो हो गया पूरा क्लीन कौन सा सही का हाँ तो ऐसा क्या दिया तो क्या देगा बोलते That's ball into the chest of the batsman. Single guided down the leg. Dheeraj moves on to 11 of 8 deliveries with that single. Score moves on to 19 after 4.3. Sushil on strike. He is on 4 of 12 deliveries. That's another good piece of bowling. Satish on his third over gave away only 9 runs, took 2 crucial wickets in his very first over. Swing and a miss. Good bowling condition today. Pitch is giving good bounce. We are in BCC cricket ground. This is the knockout match. क्या डाल रहा है भाई Beautiful piece of bowling. After the end of 5 overs, score moves on to 19 for the loss of 3 wickets. Sushil batting on 4 of 15 balls. Dheeraj on 11 of 8 balls. Satish finished his third over, gave away 9 runs by taking 2 crucial wickets in his very first over. अरे कहाँ से मिला फिर आपको कैमरा
Next bowler, Mohit. देखिए खेलो रे. That's an easy catch to the point. Good catch by the point fielder. अरे क्या मारा रे. Fielder name. Good catch by Shantanu. Dheeraj, he was playing beautifully. There was a wide delivery outside the off stump. He tried putting it over the point fielder, gave it into the hands of the point fielder. Score is 19 for the loss of 4 wickets. After the end of 5.1 over, last over of power play. In the power play, Team Alpha lose their 4 wicket. Next batsman coming into the crease is Srikanth, an experienced campaigner. Srikanth on strike, Mohit with his second ball of this over. कोई लड़का है तो बताओ ना मेरे को. Balled up. Good call from Sushil. Srikanth off strike, opening his account in the very first ball he faced. Score moves on to 20 after 5.2. Score is 20 for loss of 4 wickets after 5.2. Projected score is 75. Current strike rate and run rate is 3.75. Very good fielding by Subham. Apart from one misfield, ALB Knights are very good in the field today. Throw in the wrong end. Some confusion between the batsmen. ये अच्छा तो नहीं. कितनी है? 310 आपको मिला. कि 20 ओवर मिली. 50 में तो ऑलरेडी 50 खेले हैं. That's been played upishly. There was a chance for a cover fielder, Satish. He tried his level best. Batsman run. Batsman took 2 runs. With the 2, Sushil moves on to 6 of 18 balls. Srikanth batting on 1 of 1. Last ball of the power play coming up. Score is 22 for the loss of 4 wickets. देखिए खेलो रे. देखिए खेलो. That's been played towards the long on for a single. With a single, power play, this is the end of power play. Good over from Mohit. He gave away 4 runs, took 1 wicket. Sushil on strike. He's batting on 7 of 19 deliveries. Srikanth on 1 of 1. मैं करूँ क्या?
So the power play is over. We have change in the umpiring. Chiranjeev Day is coming to umpire. Same bowler continuing. Right arm over the wicket. The ball is still doing its bit. It's bouncing, it's swinging. Very good bowling conditions. The Alphas, they really struggled to score runs on this wicket. Just moved on his hips. 1 run towards the square leg. Sushil is off strike now. Shrikant is back on strike. And we have another wicket. Edged behind. Shrikant is gone. So half of the Alphas are fooled up. 5 wickets are gone for the Alphas. And the score is hardly 25. We have a new batsman coming up. Let's see how we do. It's actually a very good team, the Alphas. Their captain is watching all the wickets falling one behind the other. The guy in the specs, Saket Agnihotri, he will be going next. He will be hoping that these two batsmen will play until 14th or 15th over, so he can just go and swing in the last few overs. The Alphas clearly need a really decent partnership now. The ball is swinging, it's bouncing, it's doing its bit. And we have a new batsman here. And that's a no ball. So we have a front foot no ball here. It's a free hit. And is that the window Alphas were looking for? That's a great opportunity for the new batsman on strike. He should look to just whack it around the park since it's a free hit. Oh, that's a good ball. Good bounce. The ball is still bouncing very nicely. This particular bowler has bowled really well. Hardly given any bad balls. That's 1 run towards third man. It was just cut, late cut. Sushil is back on strike. Play well, Sushil. Play carefully. Lovely, beautiful batting by Sushil. Just tucked around the corner. 1 run towards square leg. And he's off the strike.
And that's the over. 7 overs are completed. The bowler has finished his spell. And the water's coming on the field with some useful message for the batsman. We have change in the umpires. Chiranjeev Day is coming out. And Imran is back at umpiring. Nazir, I'm sorry, Nazir is back on umpiring. With the bowler. 2 मिनट करता हूँ आप आ जाओ हाँ करना बस करो बस टाइम पास है बस करो Good ball from Mohit on good length, and it was played carefully by Sushil. Sushil is playing very cautious innings. He's just being the anchor of the Alphas. It was a short ball, and Sushil tried to hook it. It was a top edge, went towards short mid wicket, and that's a single. That's 1 run. Sushil is off the strike, and the Alphas are 28 for 5 with Arun UV back on strike. So we are 28 for 5 in 7.2 overs. And that was a risky single. The batsman was turned back right in time. Otherwise, there was a run out coming up. There is no need for risky singles for the Alphas because they have already lost half of their side. अल्फाज को एक साझेदारी की बहुत आवश्यकता यहाँ पे और एक तेज गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल इसको कनेक्ट नहीं कर पाए अरुण और ये बॉल जो गुडलैंड से उठ गई पिच में अभी भी काफी उछाल है गेंद का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए एलबी नाइट्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे और एक पुल शॉट जिसको लॉन्ग ऑन पे खींच दिया है सुशील जी ने और इस सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर के बाद स्कोर है 30 रन पे 5 विकेट अल्फाज का सुशील जो बहुत सूझबूझ के बल्लेबाजी करते हुए 11 रन 25 गेंदों में अरुण 2 रन 6 गेंदों में मोहित 2 ओवर 0 मेडन 7 रन और 1 विकेट स्टार्टिंग ऊपर जाके एकदम हक दिया तो पूरा दिन खराब हो जाता है यार बहुत अच्छा है बहुत कुछ नहीं करा वो अच्छा बॉलिंग किया बहुत अच्छा बॉलिंग किया बैट्समैन जबरदस्त नहीं वो मेरे को क्या मैं अपना ये क्या बोल रहा था There's a new bowler, right arm, medium pace, and he's bowling to Sushil, who is batting on 11.
स्टार्ट ऑफ 9th ओवर। और ये है बुमराह, जसप्रीत बुमराह की एक्शन में बॉलिंग करते हुए अरविंद जी। सुशील ने इसको मार दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 1 रन के लिए, और सुशील इज ऑफ द स्ट्राइक। अरुण जी इज बैक ऑन स्ट्राइक। और ये बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अरविंद, सिंगल लेके अरुण इज ऑफ द स्ट्राइक। थोड़ी सी गेंद शॉर्ट हो गई जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए स्क्वायर लेग की तरफ सिंगल। सुशील अब स्ट्राइक पे वापिस आ गए हैं। सुशील फील्ड देख रहे हैं कहां पे उनको 1 के 2 रन कर पाए। अल्फाज को यहाँ पे बहुत आवश्यकता है एक अच्छी साझेदारी की। और ये और एक सिंगल शॉर्ट गेंद कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए सुशील जी ने एक सिंगल ले लिया है। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 पे 5, 8.3 ओवर्स हो गए हैं। अल्फाज के कैप्टन साकित मैच को एनालाइज करते हुए बहुत अच्छी फील्ड सेट की है एएलबी नाइट्स ने। 2 ओवर बैटर। और एक शॉर्ट गेंद और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए हुक मार दिया है और डीप फाइन लेग पे ये शानदार चौका। इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पे 5, 8.4 ओवर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 पे 5, 37 पे 5, 8.4 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है। और एक शॉर्ट गेंद और इसी के साथ वाइड डाउन द लेग साइड। एक्शन बहुत ही बढ़िया है। लाइन में थोड़ी चूक कर रहे हैं बॉलर, डाउन द लेग साइड बॉल डाल रहे हैं। अल्फाज को अतिरिक्त रन मिलते हुए यहां पे बॉलिंग टीम ने थोड़ी फील्ड खोल दी है। और ये बहुत जबरदस्त गेंद सीधी स्टंप पे आते हुए इसको बैकफुट पे डिफेंड कर दिया है अरुण जी ने। ये डॉट बॉल, इसी के साथ स्कोर 38 फॉर 5। 9वें ओवर की आखिरी गेंद आ रही है। बहुत अच्छी गेंद बट इसको एक्स्ट्रा कवर की तरफ खींच दिया है अरुण ने, और ये सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद स्कोर है 39 पे 5। बहुत जबरदस्त एक्शन बॉलर की, लेकिन थोड़ी लाइन में चूक करते हुए थोड़े बॉल्स आउटसाइड ऑफ स्टंप, थोड़े आउटसाइड लेग स्टंप, तो इनको थोड़ी कंसिस्टेंसी बरकरार करनी पड़ेगी प्रेशर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि इनके पहले वाले बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम राकेश आते हुए राइट आर्म मीडियम।
ऑफ साइड की फील्ड पूरी पूरी तरह से बाहर, डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप पॉइंट, और ये फुल टॉस। इसी के साथ ये हो चुका है चौका, और बहुत अच्छा शॉट अरुण के बल्ले से डीप डीप मिड विकेट की तरफ खींच दिया है अरुण ने। फुल टॉस गेंद थी ये लेग साइड पे, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 फॉर 5, और बहुत अच्छी रिकवरी एक मानी जाएगी जिस तरह से शुरुआत हुई थी अल्फाज की। अल्फाज यही होप करते रहेंगे कि ये पार्टनरशिप अच्छी चले, लंबी चले। और बहुत जबरदस्त छक्का, क्या बात है, बहुत जबरदस्त शॉट। ये बॉल उनके पल्ले में थी और उन्होंने खींच दिया है इसको लॉन्ग ऑन के ऊपर से। बहुत बेहतरीन बैटिंग, और इस चौके और छक्के के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39-5। और ये बॉल गुम गई है ये स्टेडियम के पार। भाई बॉल গেছে নিয়ে আসো ভাই বল গেছে নিয়ে আসো बॉल चेंज हो चुकी है। We have a new ball in play now because the ball has gone out of the park. Two beautiful hits from the batsman. And that's another beautiful hit. It's coming towards us. It's a boundary. Beautiful shot. It's straight. Fielder tried to stop it, but he could not. 50 off And 50 for the team. Arun is covering all the dot balls. And the slow start which Alphas got in consecutive boundaries and sixes here. He's batting very, very well. Alphas must be hoping that Arun continues for another few overs. क्या हो गया? मेरे को बोल एक मिनट। Oh, decent ball, and it was defended very nicely. दे दो अब दे दो अब दे दो अब दे दो अब दे दो दे दो And the ball is back on the field. The ball which went out of the park is back on the field now. Oh, that's an inside edge. Arun tried to hit one more out of the park, but it just lucky for him, it didn't go on hit on the stumps. It was the inside edge 54 10th over and went towards 10th over fine leg. Sushil is back on strike. Sushil is playing the anchor innings. He is playing very cautiously and nicely. That's an amazing shot. The ball went towards deep mid wicket. Sushil just hiked it over the mid wicket and does another boundary. That's fourth boundary of the over, and the score moves on to 10 ओवर में 58 58 for 4 and 58 for 5. I'm sorry, I beg your pardon. At the end of 10 overs, and Alphas have recovered very nicely in this particular over. बहुत अच्छी रिकवरी, 20 रन आ चुके हैं ओवर से। बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए अल्फाज के दोनों बल्लेबाज। और इसी तरह एक ड्रिंक्स ब्रेक। दोनों टीम्स हडल में।
एनालाइज करते हुए कि क्या कर सकते हैं, कहाँ पे चूक हुई और इसके आगे क्या करना है। धीरज from Alphas talking to Sushil and Arun, deciding on the strategy. And we have a change in laying umpire also. Sharad is back off the field. Chiranjeev is on the field now. और क्या लगता है आपको शरद जी, कैसी हुई आज की बल्लेबाजी अल्फाज की और कैसी रही गेंदबाजी? स्कूल में एग्जाम है पढ़ना। शरद जी के गले में कुछ खरोच है, वो बात नहीं करेंगे। ओपन हुआ उसमें चेक कर लेंगे। क्या स्कोर चेक करते रहना। अच्छा मेरे को वही करना कर है क्या? चेक करना, वो कर रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक स्कोरिंग करना, आप कमेंट्री कर रहे हैं ठीक ना। ठीक। सुशील भाई का आया कौन गए अपना शुरू भाई अब नहीं गए? हाँ, अरे मैं नहीं करने वाला था, वो स्टार्टिंग में सेट किया इसलिए वो अच्छा मेरे को बस तो साथ आपका में बुला गेम है चल। क्या अभी? हाँ, आपका गेम है अभी? मेरा गेम नहीं है, लेके आए बस, मेरा एग्जाम है अभी। अरे यार क्या बॉल आ गया यार अंदर पहले अरे ओवर में बॉल साला। क्या स्विंग हो रही थी स्टार्टिंग से, पहले ही बॉल अंदर रहा तब तो और दिक्कत शिट थी। यार वो साला ऊपर जाके आउट होना मतलब खराब लगता है हाँ। वो। इवनिंग फिर जाके बैठो। इसी तरह 10 ओवर की समाप्ति और अल्फाज का स्कोर है 58 पे 5। एंड चेंज हो चुके हैं and they are bowling from the north end now. Can I have the bowler name please? Shantanu. पन्नी हो रहा था।